Hello. Yes. So let's go. Answering. Let's go guys. शुरू करते हैं with the today's topic. तो आज mostly we will revise this set. ठीक है. And additionally हम क्या सीखेंगे आज 1.17 जो 17th टॉपिक चल रहा है आज हमारा उसमें हम सीखेंगे फ्रोजन सेट. ठीक है. फ्रोजन सेट डॉट आई पी वाई एन बी. तो स्लाइटली सेट जो भी हमने सीखा है अभी लाइक सेट दो पार्ट्स में सीखा है हमने. ठीक है. सो सेट जो भी रहेगा उसी का ही एक प्रोटेक्टेड वर्जन इज अ फ्रोजन सेट. गॉट इट. इज जस्ट एन प्रोटेक्टेड वर्जन ऑफ प्रोटेक्टेड वर्जन ऑफ सेट. तो इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. तो कल हमने क्या क्या सीखा था. व्हाट वी हैव लर्न यस्टरडे. तो देवी जी आप भी बताओ क्या सीखा था हमने. So yesterday we learned this union, intersection, difference, right? And इन दोनों का अपडेट भी सीखा था, right? And additionally क्या सीखा था? I don't remember. In is something interaction, difference, and symmetric difference. Symmetric difference update. Is disjoint, is subset, and is superset. Okay. So all these things that we have learned. तो कल पे इतना planning था ही नहीं सीखने का. आई जस्ट वांटेड टू टीच यू दीज थिंग्स. लेकिन सही है. व्हाट वी हैव लर्नड इज सिमेट्रिक डिफरेंस डिफरेंस अपडेट. ठीक है. एंड सिमेट्रिक ट्रिक डिफरेंस सीखा. उसके बाद इज सबसेट, इज सुपरसेट, इज जॉइंट, राइट. दीज टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड यस्टरडे. तो ये like 50% ऑफ द सेट दैट वी यस्टरडे लर्न. ठीक है. सो यूनियन क्या होता है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड लाइक इन अ तो अपडेट तो वी नो राइट. तो ये चीजें बता देता हूँ. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड यूजिंग अ डायग्राम अगेन. तो दिस इज वन सेट, दिस इज अनदर सेट. ठीक है. इसमें वैल्यू ए में सेट ए इज ये ऐसे ए कर देंगे इसको. सेट ए. दिस इज सेट बी. सेट ए में वैल्यू है 1 2 3 4 एंड सेट बी में वैल्यू है 5 2 4 5 6. ठीक है. 2 4 5 6. तो व्हाट इज द यूनियन फर्स्ट. यूनियन क्या रहेगा इन सब का लाइक एवरीथिंग. एवरीथिंग इज अ यूनियन, राइट. एवरीथिंग है ये. इसको भी सीखना है. बीच बीच में आ रही है बीच में. सो व्हाट विल बी द आउटपुट 1 2 3 4 5 6. ठीक है. यूनियन का आउटपुट हो रहेगा. इंटरसेक्शन मीन्स ये वाला पार्ट. दिस इज इंटरसेक्शन. ठीक है. दिस इज इंटरसेक्शन. देन डिफरेंस क्या रहेगा. अगर मैं डिफरेंस बोलू ए डिफरेंस बी, राइट. ए डिफरेंस बी. गलत. ए डिफरेंस बी. डी इज अ डिफरेंस. ठीक है. ए डिफरेंस बी. तो उसमें ये वैल्यूज आ जाएगी 1 and 3 बिकॉज ए एंड बी में से लाइक ऐसा माइनस कर लेते. दिस इज ए माइनस बी. तो बी क्या है. ये एंटायरली इतना बड़ा है. दिस इज बी, राइट. दिस इज बी. तो ए माइनस बी. डिफरेंस मतलब माइनस ही करेंगे, राइट. ए माइनस बी. तो क्या आ जाएगा 1 3. ठीक है. उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आएगा.
ए माइनस बी, राइट। उसमें से ये ए की वैल्यू भी इधर से ये कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, सो सॉरी, ये दो जितने भी जो दो कॉमन चीज है वो निकल जाएगी और आवर आउटपुट विल बी 1356 सिमेट्रिक डिफरेंस में, ठीक है, 1356। तो उस तरीके से इमेजिन करना है ये चीजों को, सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों भी जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। बेसिकली दिस इज अपोजिट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में अगर 2 और 4 आएगा तो सिमेट्रिक डिफरेंस में बची हुई चीज आएगी, ठीक है। देन वी सेड कि इज सबसेट, तो हम ऐसे लिखेंगे सिमिलरली, ए डॉट सब इज सबसेट ऑफ बी। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज मतलब क्या रहेगा, क्वेश्चन, क्या ये सबसेट है, राइट। तो सबसेट कैसे लिखते हैं, अरे यहाँ पर बैठ जाइए आप, ठीक है। तो सबसेट कैसे लिखते हैं, तो दिस इज ए सबसेट, ठीक है। तो ये ए है फॉर एग्जांपल, फिर से वही करते हैं, ये ए एंड दिस इज बी। क्या ए बी का सबसेट है, राइट, बिकॉज दिस इज इनसाइड दिस, राइट। अगर ऐसा वैल्यू रहे 1 2 3 4 5, राइट, मतलब ए का ए में 4 और 3 ही है एंड बी में 1 2 3 4 5 है। लाइक सुपर सेट क्या रहता है, जो सबको एनगल्फ कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, राइट। so this is how it is, and this also we can say, क्या बी सुपर सेट है ए का, राइट। क्या बी सुपर सेट है, तो बी तो सुपर सेट है क्योंकि बी में सारी वैल्यूज है ए की, राइट। so this is how you can see। और ये है इज डिसजॉइंट। इज डिसजॉइंट मतलब बी में सारी ए की वैल्यूज रहनी चाहिए, अगर ए की एक भी वैल्यू नहीं रही, लाइक ऐसा रह गया, राइट, सम वैल्यूज ऐसा रह गया, तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स आ गया। और जहां पर भी इज रहेगा तो वो ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट देगा, ठीक है। एंड अदर्स आर जस्ट अपडेट, ये बस अपडेट कर रहा है, जो भी इनिशियल इनिशियल सेट रहेगा उसमें अपडेट कर रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑलरेडी क्लियर, लाइक कल हमने ये सिमिलर चीजें डायग्राम से देखी थी। सो ऑल दिस थिंग्स, ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन बी, वी गॉट दिस यूनियन, लाइक इन दोनों चीजों का यूनियन। उसके बाद यूनियन में यू कैन ऐड मल्टीपल मल्टीपल सेट, ठीक है, यूनियन में यू कैन ऐड मल्टीपल सेट, दिस इज अनदर एग्जांपल, राइट। देन अनदर एग्जांपल, फिर इंटरसेक्शन में क्या रहेगा, जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू है वही आए, सॉरी, जो भी नॉन डिस्टिंक्ट वैल्यू, जो भी कॉमन वैल्यूज है दैट विल बी देयर, ठीक है। पुणे एंड मुंबई आर कॉमन वैल्यूज वी हैव गॉट। एंड इंटरसेक्शन अपडेट क्या करेगा, बस जो भी वेरिएबल हम बोल रहे हैं उसमें वो वैल्यूज अपडेट कर देगा। राइट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन प्लस अपडेट, ओके, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ intersection plus update, is the combination of intersection and update। Sorry, then we saw this difference, so basically we just saw like a minus b रहेगा, b की सारी वैल्यूज चली जाएगी, सिटीज माइनस सिटीज टू रहेगा, तो सिटीज टू की सारी वैल्यूज माइनस हो जाएगी, तो पुणे एंड मुंबई माइनस हो गया, ओनली हैदराबाद बच गया, राइट। एंड सिमिलरली यू कैन डू द फॉर मल्टीपल थिंग्स, लाइक ये एक पेरेंट रहेगा, सिटीज इज द पेरेंट वन, उसमें से ये दो चीजें माइनस कर दी, तो पुणे चले जाएगा, मुंबई चले जाएगा और दिल्ली चले जाएगा, हैदराबाद विल बी द आंसर। राइट, so we saw this difference between union, intersection and difference. So union will give all the values, see all the values, intersection will give you the common values, like Shahrukh is common, Salman is common, so we got Shahrukh and Salman, and difference will give, like basically A में से B minus हो जाएगा, so जो भी values like Shahrukh and Salman will get minus and Ranveer will be remained, right, Ranveer and Ranveer। और यहाँ पर अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस भी लगा दूं तो इसके अपोजिट, लाइक ये जो भी इंटरसेप्ट का सलमान एंड शाहरुख का है, ये माइनस होकर रणवीर अमिताभ एंड अजय विल बी द आउटपुट, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो आगे वही देखते हैं, अपडेट भी ऑलरेडी नो क्या करता है ये, पर्टिकुलरली जो
फर्स्ट वेरिएबल है उसमें अपडेट कर देता है चीजें। ऑलराइट। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस जैसे बात हुई कि ए एंड बी में से जो भी कॉमन वैल्यूज जैसे ए 1 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 4 5 एंड 33 विल बी द आउटपुट। इज इट राइट? 1 निकल जाएगा, यस इट इज राइट। 4 एंड 5 विल बी द आउटपुट, ठीक है। तो ये दिस इज, यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, and then if I run this, 4 5 and double 3 is the output, but if I uncomment this, so basically I will get this again the previous set। तो ये डिफरेंस देने के लिए मैंने यहाँ पे रखा था। अदरवाइज मतलब सिमेट्रिक अपडेट डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट के डिफरेंस की उसमें जो अंतर है वो समझने के लिए, ठीक है। तो अपडेट क्या करेगा, दिस पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल रहेगा हमारा उसमें चीजें अपडेट कर देगा। नाउ यू सी दिस इज द आउटपुट। इज डिसजॉइंट, so when there is no item common between two set। ओके, मैंने वो टाइम पे थोड़ा गलत बता दिया। so ये दिस शुड बी ए एंड दिस शुड बी बी। इट ऐसा, बिल्कुल ही ऐसा। जब कब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा, ये रहेगा 1 2, ये रहेगा 3 4, तब इज डिसजॉइंट आएगा ट्रू। ठीक, लाइक ये इसमें से आप देख सकते कोई भी चीज कॉमन है नहीं, सो इज डिसजॉइंट आ गया ट्रू, ठीक है। और अगर कोई भी एक भी चीज कॉमन रही, जैसे वन वॉज कॉमन हियर, सो वी गॉट फॉल्स, राइट। और सबसेट का वही है कि अगर सेट वन में अगर सारी चीजें रहेगी सेट बी की, तो सेट वन क्या हो जाएगा, एक सुपर सेट हो जाएगा। दिस विल बी अ सुपर सेट, ठीक है, एंड दिस विल बी अ सबसेट। सुपर सेट किसको कहते हैं कि जिसमें सारी सबसेट्स रह सकती है। सुपर सेट मीन्स इट मीन्स इट हैज ऑल ऑफ दी वैल्यूज, ठीक है। And subset means subset means it has partial values from superset, ठीक है। सबसेट तभी बोलेंगे जब ये सारी वैल्यूज किसी सुपर सेट से बिलोंग करेगी, ठीक है। 1 2 3 इज बिलोंग्स टू सुपर सेट ऑफ सेट, लाइक इसको हम सुपर सेट कह सकते हैं अभी, और इसको सबसेट। और क्वेश्चन भी वही है, क्या सेट टू सबसेट है सेट वन का, so that is true, and because these values are here as well। ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलर वही क्वेश्चन है, क्या सेट टू सेट वन का सबसेट है, बट वी कैन सी 1 2 is there but 3 is not there, so that is why we got false। then the next question is superset, तो इसी का ही उल्टा, राइट, इज सुपरसेट। तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं हम, क्या सेट वन सेट टू का सुपर सेट है, इट विल से ट्रू, राइट, इट विल से ट्रू। एंड here are some more question examples like क्या सेट टू, like सेट टू यहाँ पर बड़ा है देखो guys, ठीक है, and it has all the values that subset, like यहाँ पर set one is a subset, ठीक है, यहाँ पर set one is a subset and set two is a superset, superset, ठीक है। सेट टू इज अ superset। तो हम बोल रहे हैं क्या सेट टू दिस, क्या ये सुपर सेट है सेट वन का, तो यस, बिकॉज ऑल ऑफ दिस सबसेट का सारा वैल्यू सेट वन में है, सेट टू में है, विच इज अ सुपर सेट। and this is another example of a negative example। so I hope everything is clear till now। If this is clear guys, if this is clear, type yes in the comments। ये सारी चीजें कल हमने सीखी थी, type yes in the comments। type yes in the comments so that we can start today's lecture।
cool. सो टुडे हम कुछ जो कल सेट के जो भी फंक्शंस बचे थे वो कंप्लीट करते हैं. जैसे वेरी फर्स्ट इज एनी, राइट? बेसिकली व्हाट इज एनी? So it returns it returns true if all the items in the set one are present in the set two. No, that is wrong. So it returns true. Okay, it returns true if even a single item is not zero or not false. Okay, what does this mean? Let's try and understand. Let's try and understand. So let's say new set is equals to, okay, a new set is equals to, for example, this 0 1 2 3 4. Okay, 0 1 2 3 4. And if I say any and ये, ठीक है, if I say like this, so अगर मैं इसको कर दूंगा, अरे यार जीरो था तभी भी आ गया फॉल ट्रू, नॉट जीरो एंड नॉट फॉल्स. यस, ओके. अगर जीरो नहीं रहेगा, जैसे और एक एग्जांपल दे देता हूँ. ठीक है, और एक एग्जांपल, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, फॉल्स ऐड करेंगे. ठीक है, फॉल्स ऐड. सो सो अगर इसमें फॉल्स रहेगा, लाइक नॉट फॉल्स रहा तो ट्रू आ जाएगा. अभी इसमें नॉट फॉल्स नहीं था. नॉट जीरो रहा, लाइक जीरो भी रहना चाहिए. ठीक है, बेसिकली अगर जीरो, नॉट जीरो, नॉट फॉल्स, जीरो है तो ये फॉल्स आ जाएगा. अरे यार ये भी ट्रू आ रहा है. It returns true if even a single item is not zero or not false. For example, अच्छा, okay, okay. I got confused, guys. Let's say now is the set जिसमें हम बस फॉल्स लिए हैं, जीरो जीरो लिए हैं, ठीक है, जीरो लिए हैं, अगेन जीरो लिए हैं, एंड फॉल्स फिर से लिए हैं. ठीक है, तो बेसिकली एनी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर. एनी इट मींस ये हर एक सिंगल वैल्यू पकड़ेगा. तो दिस हैज टू बी फॉल्स. तो अभी इसमें अगर मैं, देखो यहाँ पर फॉल्स है तभी भी ट्रू आया. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लाइक with all these three examples. Okay, with all these three examples. तो तीनों के तीनों एग्जांपल्स तो मैंने दे दिया आपको. तो नाउ अगर आपके लिस्ट में दो चीजें रखते हैं, ठीक है, ये ट्रू वाला रखेंगे, ये फॉल्स वाला रखेंगे. तो whenever you use any function on the set, ठीक है, सेट पे जब भी एनी फंक्शन यूज करोगे, वो कब फॉल्स आएगा, वो कब फॉल्स आएगा, जब सारी वैल्यूज इधर फॉल्स है या जीरो है, फॉल्स है या जीरो है. ठीक है, सारी ही वैल्यूज, लाइक ईच एंड एवरी वैल्यूज हैज टू बी आइदर जीरो और फॉल्स. ठीक है, और बाकी अगर कोई भी एक वैल्यू, लाइक इसमें फॉल्स भी रहा जीरो भी रहा, नो वरीज. लेकिन इनको छोड़कर अगर कोई एक भी वैल्यू, लाइक अगर ये टू भी नहीं रहता और थ्री भी नहीं रहता, ठीक है, टू भी नहीं रहता, थ्री भी नहीं रहता, एंड इफ इट वुड हैव बीन ओनली वन वन नंबर प्रेजेंट, ठीक है, वन ऑल्सो रहेगा, तभी भी ये ट्रू आ जाएगा. ठीक है, तभी भी ये ट्रू आएगा. सो नाउ दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यू कैन सी जीरो तो है, जीरो तो है, लेकिन जीरो छोड़ के बाकी और चीजें, इसलिए ट्रू आ गया. इसमें जीरो भी है, फॉल्स भी है, लेकिन बाकी और चीजें, इसलिए ट्रू आ गया.
लेकिन इसमें इफ यू सी, इसमें इफ यू सी ओनली फॉल्स एंड जीरोस आर देयर, ठीक है, ओनली फॉल्स, जीरो 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 फॉल्स और जीरो 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 फॉल्स रहते, इट वुड इट गेव यू, इट विल गिव यू सी फॉल्स, राइट? इट मींस ये फॉल्स क्यों दे रहा है? लाइक इन चीजों का पोटेंशियल इतना वैल्यू है नहीं गाइस इसमें, सेट में, ठीक है, इन चीजों का पोटेंशियल इतना वैल्यू है नहीं, ठीक है, लाइक सी, लाइक जीरो का वैल्यू, जीरो को भी फॉल्स ही कहा जाता है, लाइक वन को ट्रू कहा जाता है, सो लेट मी जस्ट ऐड हियर एज वेल, हियर, so 1 is equals to true and 0 is equals to false, ठीक है, so it means जब जीरो और फॉल्स कोई भी सेट में रहेगा, अभी मैंने इसको पूछ लाइक रिटर्न करा तो ओनली फॉल्स आया, इट मीन्स बाकी सारी चीजें ये कॉमन हो गई, ये तो इक्वल है ना, ये तो सेम चीजें हो गई, जीरो एंड फॉल्स इज द सेम थिंग, एंड सेट डज नॉट अलाउ व्हाट, सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट? तो ये चार चीजें डुप्लीकेट हो गई एंड ओनली वी गॉट व्हाट, फॉल्स एज आउटपुट, ठीक है, फॉल्स एज आउटपुट, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एनी। तो ये एनी यूज कब करेंगे, लाइक व्हाई आई हैव टू लर्न दिस एनी फंक्शन, राइट? So you need to check, sometimes you will get a data, right? Sometimes you will get a data where all the values may be like looking at like this, ठीक है, कुछ ऐसी ही वैल्यूज दिख रही है आपको सामने, लेकिन डेटा बहुत बड़ा है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ रोज है, ठीक है, बहुत बड़ा डेटा है, तो यू वांट टू चेक कि यार इसमें कोई एक सिंगल वर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जीरो जीरो फॉल्स, ठीक है, मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है और इसके बीच में कहीं एक वन है, छुपा है, दैट वी डोंट रियली सी, ठीक है, हमें पता ही नहीं वो कहाँ पर है करके, ठीक है, तो ये कुछ सारे ऐसे दिख रहे हैं, बट यू आर सेइंग टू योर मैनेजर के अरे सर दिस डेटा इज नॉट यूजफुल, इसमें सारे चीजें फॉल्स एंड जीरोस है, बट योर मैनेजर सेज कि चेक कर लो कोई वैल्यू, काम का वैल्यू रह जाएगा, है ना, चेक कर लो, लाइक हैव अ लुक एट वंस दैट यू मे फाइंड अ काम का वैल्यू, so then if you run this small query any and use that data sets very well, and if you check okay now it is true, so now you can say yes to your manager that you are right, or you can be an hero कि एक simple line of code use करके you have determined that your super data set, like इसमें बहुत ज्यादा data रहेगा, right, thousands of row रहेंगे, then you will get to know you can say कि yes, there is some value in the there is some useful value in the data set, ठीक है, so that is why this any function is used, okay, I hope this is clear guys, I hope this is clear, if clear again type yes in the comments, right, so I will get to know. The next is all, is it clear? Yes, the next is all, okay, so now इसका कहना है, इसका कहना है it returns, it returns true if all the items are either not zero, not false, क्या सिमिलर लिख दिया मैंने? हाँ, ओके, तो इसका थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस रहेगा इसके अंदर,
तो हमने क्या रहा लिखा है यहाँ पर, इफ इट रिटर्न्स ट्रू इफ इवन अ सिंगल आइटम, इवन अ सिंगल, यहाँ पर फोकस करो, ठीक है, इवन अ सिंगल आइटम, ठीक है, इधर फोकस करना है हमें। तो हम कह रहे हैं it returns even like true even a single item is not a zero or false. Okay, even a single item is not zero and false. And now we are here, we are saying it returns true if all the items are either not zero or false. ठीक है, let's try with examples. ठीक है, uh, यहाँ पर we will say new set is equals to, so I have used this 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4, okay. And if I say all of new set, ठीक है, it will return false. One more example let me give you of true, ठीक है, set the set is equals to the set is equals to, for example, 2 comma 4 comma 5 comma 1 comma true, ठीक है, true. Now if I say all and if I return this, it should give us a true, right? एक और एग्जांपल दे देते so that we can find इसी को ही मैं जीरो की जगह पे फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, फॉल्स एंड जीरो, लाइक ये ट्रू मीन्स वन, ठीक है, जीरो मीन्स फॉल्स, जीरो फॉल्स मीन्स जीरो, वन मीन्स ट्रू, ठीक है, तो ये भी हमें फॉल्स देगा. नाउ इफ यू सी, अभी क्या रहेगा, सो अर्लियर जब जीरो एंड फॉल्स रहता था तभी भी हमें क्या आता था, ट्रू आता था, राइट. अब जीरो एंड फॉल्स रहता था, ट्रू आता था. नाउ इट सेज, पहले क्या था, और एक चीज देखते हैं, ठीक है, तो ये रहेगा ट्रू, ये रहेगा फॉल्स. तो इट सेज कि all of the items either should be true, either should be one, either should be any other number like 2 3 4, ठीक है. इसमें भी 1 2 3 रहेगा, लेकिन इसमें अगर एक बार भी जीरो आ गया और फॉल्स आ गया, लाइक इन एट अ सिंगल टाइम ऑल, एक बार भी आ गया तो ये फॉल्स रिटर्न देगा. तो इसमें ये चेक करेगा ऑल ऑफ द आइटम, ठीक है, ऑल ऑफ द आइटम. तो सारे आइटम्स चेक करेगा, ठीक है, सारे आइटम चेक करेगा, और उसमें से अगर एक भी आइटम, लाइक ये यहाँ पर यू कैन सी, लाइक वी गॉट जीरो, वी गॉट दिस फॉल्स एज आउटपुट, again false, so that's why we got a false. But in this example, particularly only example जिसमें true है, ठीक है, true है, one है, and others number are also there, ठीक है, so that is why we got true. Okay, that is why we got true. So pretty tricky to understand. अभी ये जो any है ना उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, any के साथ कंपेयर करते हैं. So this is one more set, this is another set. इसमें जब false and zero आएगा तभी ये false बोलेगा, अदरवाइज इसमें एक भी दूसरा नंबर रहा, लाइक ये दूसरा नंबर है, राइट, ये दोनों, ये तीन दूसरे नंबर है, तो ये ट्रू दे देगा, ठीक है, ट्रू दे देगा. सो दिस इज द डिफरेंस. ऑल में ये सिमिलर कंडीशन को फॉल्स दे रहा है, ऑल में लाइक दीज आर सिमिलर कंडीशन, राइट, दीज आर सिमिलर कंडीशन जिसमें 1 2 3 भी है, 1 2 3 भी है, जीरो एंड फॉल्स भी है. ऑल में इट इज चेकिंग कि अगर एक भी जीरो एंड फॉल्स आया तो मैं फॉल्स दे दूंगा. ट्रू में लाइक एनी में इट इज चेकिंग दैट अगर एक भी है ना आएगा, लाइक जीरो एंड फॉल्स, तो मैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इट इज फोकसिंग ऑन अगर एक भी दूसरा वैल्यू आएगा तो इट विल गिव अस ट्रू. अदरवाइज सारे अगर जीरो एंड फॉल्स रहेंगे तो आई विल गिव यू फॉल्स, ठीक है, आई विल गिव यू फॉल्स. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड इन, ठीक है, ऑल एंड इन, ठीक है, ऑल एंड इन. So
इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? सो दैट लाइक लेट्स से यू हैव अ वेरी लॉन्ग डेटा, बहुत लॉन्ग डेटा, बहुत बहुत बड़ा लॉन्ग डेटा, और उसमें सारी की काम की चीजें 1 2 3 4 है ना, किसी का नाम है, एवरीथिंग इज देयर, एंड यू वांट टू चेक कि यार क्या इस डेटा में कोई जीरो या फॉल्स, मतलब जो कम काम की चीज है, विच इज नॉट रियली अ राइट वर्ड और राइट डेटा फॉर आवर से आवर वर्किंग डेटा सेट. सो यू कैन यूज दिस ऑल फंक्शन, और अगर तुमको फॉल्स आता है, इट मीन्स इट मीन्स कि योर डेटा कंटेन्स आइदर जीरो और फॉल्स. ठीक है, योर डेटा सेट कंटेन्स आइदर जीरो और फॉल्स. ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड और नॉट? Very low response today. Sleeping, sleeping, sleeping or not? Yes, yes. Okay, cool. So let's. I'm closing this one for today. Like set हमारा हो चुका है. Congratulations, guys. We have come so far. हमने Python सीखा, वेरिएबल सीखे, स्ट्रिंग सीखा, प्रिंट फंक्शन सीखे, वेज टू प्रिंट स्टेटमेंट सीखा, न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर सीखे, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट सीखे, स्ट्रिंग फंक्शंस काफी ज्यादा लंबे गए, लिस्ट फंक्शन काफी ज्यादा है, लाइक five files that we have learned. Then loops, which was one of the interesting topic जिसमें तीन मतलब बहुत से ज्यादा लेक्चर हमने कंट्रीब्यूट करे. Then tuple and set सीखा. So almost 90% of the Python is covered. And now let's learn uh, frozen set and what dictionary in coming lecture. So let's cover frozen set today. ठीक है, cover होगा नहीं होगा, I'm not sure, but let's quickly have some difference. फर्स्ट तो इसको फ्रोजन सेट लिख देते हैं. फ्रोजन सेट, ठीक है, फ्रोजन सेट. So now we can have a difference between set and a frozen set. ठीक है, set and a frozen set. So set is mutable, right? Set is a mutable. Set is unordered. Set does not allow duplicate values. Are not allowed, right? Right? और कोई चीजें हैं सेट के बारे में? और कोई चीजें हैं सेट के बारे में? Now let's understand what is frozen set in comparison to set. So the very first difference is set is an immutable. ठीक है, frozen set, like set is mutable, right? मतलब इसको you can change this, you can edit this one, but the very first thing that we are learning in terms of frozen set is it is immutable. ठीक है, it is immutable. The second thing is it is unordered. ठीक है, second thing is it is unordered, and the third thing is duplicates are not allowed. So if you see, it is almost similar to set, but just the name says frozen. Frozen means like someone has frozen. It was mutable first. Someone has frozen it, so you cannot really change it. किसी ने उसको आइस करवा दिया. So now you cannot really make changes in it. Okay. Now you can not really make changes in it. Cool. Right. So let's take some examples and start understanding. Okay. Let's take some example and start understanding. So the very first example is set 1 equals to, तो मैं change कर देता हूँ Python में. Set 1 is equals to this one, right? And if I say frozen is equals to frozen set,
सेट वन, ठीक है, ये फ्रोजन एज अ ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। So if I print set one and if I print frozen and type of a frozen, ठीक है, ये सारी चीजें। So first ये क्या है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। Now you can understand it better, इसको भी ये कर लेते हैं। So now you see ये एक सेट है, ठीक है, इसको मैंने फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करा यूजिंग दिस फ्रोजन सेट ऑपरेटर या कन्वर्टर या वॉट एवर यू कॉल इट, ठीक है। सो दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल, ये बस वेरिएबल है, मैंने फ्रोजन एज एन वेरिएबल लिया। तो मैं अभी इसको भी प्रिंट करूंगा और इसको भी प्रिंट करूंगा, इसका भी टाइप चेक करेंगे, इसका भी टाइप चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट्स रन दिस। सो नाउ यू कैन सी waiting for the connection. Meanwhile, any questions, guys? Meanwhile, any questions? Which lectures were better? मॉर्निंग वाले लेक्चर सही है या इवनिंग वाले? व्हाट डू यू थिंक? मॉर्निंग में मजा आ रहा है इसलिए मॉर्निंग डाल दो या इवनिंग? सही है भाई, मॉर्निंग है भाई। ओके, कूल, लेट्स सी व्हाट द आउटपुट दैट वी हैव गॉट। बैठ जाइए यहाँ पर। So the output is first set is like this। तो ये सेट, this set has got printed and उसका क्लास या उसका टाइप जो है that is a set, ठीक है, उसका क्लास सेट है, राइट। सेकेंड जो सेट है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट हुआ है। तो नाउ दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। जब जो नॉर्मल सेट रहेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा और जो फ्रोजन सेट रहेगा उसके सामने फ्रोजन सेट लिख के आएगा एंड उसका टाइप भी फ्रोजन सेट रहेगा, ठीक है, उसका क्लास जो है फ्रोजन सेट रहेगा। तो दिस इज द ओनली नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट, ठीक है। सेट एंड फ्रोजन सेट इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। सेट में ऑलरेडी वी डोंट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड ऑल, तो वो सारी चीजें तो बच गई हमारी सीखने के लिए, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग दैट इन द फ्रोजन सेट इट इज नॉट इवन म्यूटेबल, सो यू कैन नॉट रियली चेंज द आइटम। सो whichever functions which were related to editing this particular set, so those are also got eliminated. But why frozen set introduced? For creating more safety to the data, right? So one should not really edit the data, right? So this is the example, okay, this is the example. So now let's understand some functions, क्या ये some functions work करेंगे, okay? So the very first function, हम लाइक डिफरेंस ही देखते रहेंगे, ठीक है। क्या अपडेट फंक्शन जो हमने विच वी हैव लर्न इन द सेट, राइट, विच वी हैव लर्न इन द सेट, will that work, right? So let me take one set one, yeah, similar set में, okay, let's make it, let's create it। So my set one is this, ठीक है, जो मेरा normal set, which is my normal set, and my frozen set, frozen set, for example fr2, if I taken or fr1, ठीक है, my frozen set which is again frozen set, right, for example 10 20 30, ठीक है। Now this is my
This is my frozen set. ठीक है? FR2 is my frozen set and set1 is my normal set. Okay. So if I say set1 dot update set1 dot update fr1, okay, set1 dot update fr1. So will these values will get added here? Okay. So इसको अभी mystery रखते हैं. ठीक है. Let's keep that a mystery. And now here instead of that we are saying fr1 में अपडेट कर दो set1 को. ठीक है, set1 को and print fr2, print f12. ठीक है. So what is the difference here and here? So now हम क्या कर रहे हैं? We are trying to update this set1 को this set1 में set2 add कर रहे हैं. Add as in update कर रहे हैं. ठीक है. So we are trying to add this here, right? A frozen set goes into a normal set. Okay, a frozen set goes into a normal. And here we are doing this. A normal set goes into a frozen set. Okay, a normal set goes into a frozen set. A frozen set goes into a normal set. Okay, updating, right? We are updating. So let's run these things. Okay, let's run these things. So first I've run this. Okay, so this frozen set, sorry, the normal set got appended or updated a frozen set. Okay, and ultimately the entire set become a normal set. Okay, ultimately the entire set become a normal set. Okay, so this is a normal set, ये frozen set की values, but entirely this is now a normal set. Okay, again now here, if I run this, you see what we are trying to do is हम ये वैल्यूज यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो दिस इज अ फ्रोजन वन. ये तो सिकड़ चुका है ना. आइस आइस ये एक आइस क्यूब है. एंड व्हेन यू ऐड समथिंग इन अ आइस क्यूब, like let's say if you put a chocolate syrup on ice cube, what happens? That spills out, right? That spills out. So the thing is we don't get any output. So this is a wrong example. Okay. So since this is immutable, you cannot really change this. Okay, you cannot really change this. So what we have learned in terms of update, you can add a frozen set in a normal set, but you cannot add a normal set into a frozen set. Okay, a normal set into a frozen set. Because this is already frozen, this is immutable. Name says frozen. Keep in the mind that like you have to remember these things in this in a such a way that uh, it you remember all those things. Okay, you remember all those things. So based on the same principles, what do you understand about this? Okay, let me say intersection update. ठीक है, intersection update. तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए गाइस? Put in the comments that what should be the output. What should be the output of this particular code? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? I'm doing intersection update. Intersection update. ठीक है? Intersection update. So what should be then? What should be then? He says error. He says error. And if this is error, okay, I accept this is error. Okay, I will not run this. But let's say you are right. Intersection update is error. What about this difference update? What about this one? What should be the output of difference update? What should be an output?
He says error, right? Any more answer? To us is 1, 2, 3, 4, 5. So the difference is this. But the difference is accepted, but we are trying to update. So we need to focus on this update, update, update. Why? Because it is trying to update this one. अपडेट तो वर्क ही नहीं कर रहा है. दिस इज फ्रोजन. ये सिकुड़ चुका है. नाउ यू कैनॉट रियली मेक चेंजेस हियर. So be it intersection or be it difference or be it normal update, it will throw an error. Okay, it will throw an error. So we have to understand, and in a similar way, this will also throw an error. Symmetric difference will also throw an error, guys. Okay, this will also throw an error. Okay, because it is trying to update, right? It is trying to update. So you cannot really do that. So you need to focus on the word that is frozen. ठीक है, ये frozen है, ये सिकुड़ चुका है. This is immutable. I cannot really edit this one. Otherwise, what I can do, that can be done. Okay. Otherwise, whatever it can be done. Okay. So let me just give you one more example, जिससे और your thinking process will improve. ठीक है. What I am saying. Now what I'm saying. Let's say I have a set 1 as a normal set, fr1 as a frozen set, and I am saying I have this fr2. ठीक है, जिसमें जिसमें I am saying the fr1 which is a frozen set is union of set 1. ठीक है, is in union of set 1. ठीक है, क्लियर तो है. ठीक है. So now in the same logic, what will happen? So I am trying to union this. Union means addition. 1, 2, 3, 4, 5 plus 10, 20 and 30. So what will be the output? What will be the output, guys, here? What will be the output? I'll keep this screen on. What will be the output? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Anyone wants to give a chance? I will open this question in the same way. Okay? I will open this question in the same way. And I will open another question for you to think better. Okay? So now I am saying I have this 1, 2, 3, 4, 5. Okay? And I have this 3, 4, 5, 10, 20, 30. And now instead of this, I am saying of difference of set 1. Okay? Difference of set 1. So set जो FR1 है उसमें से difference of set 1. Okay? Difference of set 1. If this gives 1, 2, 3, 4, 5 and 10, 20, 30 error, and this says 1, 2, 10, 20, 30. 1, 2 and 10, 20, 30. So first तो ये तो symmetric difference है नहीं. ठीक है? Symmetric difference है नहीं. So let's open third question. ठीक है. So the output that you have said 1, 2 and 10, 20, 30 is it should be an output of symmetric difference. Here I am saying f bar 1 में से set 1 minus करो. So set 1 में से 1, 2, 3 minus हो जाएंगे. 10, 20, 30 should be an output. ठीक है. ठीक है. So let's not go ahead and let's try to see all these three things work or not. ठीक है. So union will give us
and this output. Why? Because the concept of a frozen set says this is an ice cube. So you can mix with what? You can mix with rum, vodka, whiskey. So jokes apart, but you can add this anywhere. Okay, you can add this anywhere. And difference क्या कहता है कि you can subtract it also, right? Subtract as in you can eliminate, or like this is not update. This is just giving a view. Okay? This is just giving a view. This is not affecting FR1. So if you have understood the concept of difference, okay, difference or symmetric difference, or the last thing that we have sent, union also. So these are not really affecting your FR1. So if I you know if I simply ask FR1 here, if I simply ask FR, it is just similar to what it was. It has not been updated. इसको update नहीं कर सकते. You cannot really change this, but you can get a view. So this is giving you just a view what will happen. ठीक है? So if I want to change this one, if I want to change this one, I have to use difference update, which will give an error जो हमने ऊपर देखा है. ठीक है? So union will give us the union of all values. Difference will give us the difference of this, and symmetric difference will give us a symmetric difference, right? So basically common values cut जाएगी. 3 4 5 will not be there. 1 2 3 1 2 and 10 20 30 will be there. Okay, everyone getting it? Say we are declining in a new variable. Declining क्या रहा है? I could not understand this. अच्छा, हाँ इसका भी सेम है, राइट? इसका भी सेम है कि if you again ask fr1, if you again ask fr1, it will return this, it will not update this. Since इसको कुछ हो नहीं रहा है, frozen said you are not really doing anything with this one, you are not really doing anything with this one. इसको जब तक हाथ नहीं लगेगा, all everything will work. Here you are creating a different frozen set, you are creating a different frozen set from these two. Okay, so that is why you got an output, and the first frozen set is intact. You can see ये जैसे के वैसा है. ठीक है? So that is why we are getting these output. ठीक है? Declaring, we are declaring a new variable. Yes, you are right. Right, you are right. So let me just give you one more interesting example. So we will be learning what we have learned till now about a set, right? It is always will be comparison, right? So now intersection, right? Intersection. So whatever you have a thought about this frozen set, whatever you have learned about this intersection, right? All these things. So answer accordingly. So इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? So this is a frozen set. This is a normal set जिसमें 1 2 3 4 5 10 20 30. Okay, and I am asking for intersection. So what should be an output, guys? And you have also have to remember that it is a frozen set. You also have to remember that it is a frozen set. So let let's put your answers here. So he says 3 4 5. Suhas says 3 4 5. Any more answers?
If that is 3, 4, 5. Okay, so let's run this, and the answer is right, 3, 4, 5. But not only 3, 4, 5, frozen set of 3, 4, 5. ठीक है, क्योंकि we are asking a frozen set. A frozen set में से we are creating. ठीक है. Now let's move on to this is disjoint. So is disjoint हो या is superset हो या is uh, subset हो, all will work same because these are just giving हमें ये अपडेट दे रहे हैं बस. ठीक है, इट इज नॉट रियली अफेक्टिंग दिस वन. ठीक है, तो बेसिकली इज डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट मतलब दोनों भी एलिमेंट्स, दोनों भी सेट में से बोथ सेट शुड नॉट बी सेम. राइट, एक भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए. देन अगर एक भी एलिमेंट सेम रहा तो इट विल गिव अस एन एरर. ठीक है, तो इफ आई से लाइक दिस यू कैन सी इट गिव एन एरर. ठीक है, तो इसको और एक another example बना देता हूँ so that you will understand it much better कि why it gave true and why it gave false. ठीक है, and another example is if I want to give is a superset, right, is superset and is subset. ठीक है, so now if I say is superset मतलब fr1 क्या इसका superset है. so if I say like this and fr1 क्या सबसेट है. If I do like this, so we must get true and true. ठीक है, is sub is subset. ठीक है, we must get true. ठीक है, so these are just giving us some boolean values whether it is, these are just checking, these are not really affecting our frozen set. So that's why we are getting no errors here. Okay, is disjoint हो या is superset हो, right, these are all things. Okay, okay, all good, guys. All good. If all good, if you understood everything today, so type yes in the comments. Type yes in the comments. Meanwhile, I will just give you a quick recap. Okay. So set means these are mutable, unordered. This does not really allow duplicate values that we have learned in yesterday's class. Today we have learned this frozen set. This में frozen set is just immutable. इसको इसको you cannot change. By comparison, by keeping in the mind that this is immutable, you need to learn these things. Like, right? So set does look like this. Frozen set does look like this. Like frozen set of whatever the set is. Okay. Then we have seen इसमें update function. You can update in a normal function. You can add this frozen set in a normal set, but you cannot really add in a normal set in a frozen set. Okay. Then similarly, update function of interaction हो या difference update हो या symmetric difference हो, that will give us an error, whereas union will basically union these elements. Frozen or difference will give us a difference, but creating a different frozen set, not really affecting the very first one. Okay. Similarly, symmetric difference will also give an output. Interaction will also give an whatever the interaction that we have. 3, 4, 5 is disjoint हो या disjoint हो या superset हो या subset हो, these all will give us what, true or false values because these are just checking. is means क्या है, क्या fr1 क्या ये सबसेट है सेट वन का, राइट. इट इज जस्ट चेकिंग yes or no. ठीक है, it is yes, it will true, it will return true, otherwise false. ठीक है, so this is all about today, guys. So if we would have some more times, I would have taken some miscellaneous concept in terms of packing or unpacking, but we can continue that in the tomorrow's lecture. And
tomorrow, hopefully, we will start the dictionary data type. Okay. So until then, if you have understood everything and if you don't have any questions, then we can close the call. And you know what to write in the comments if you have understood everything. Write win in the comments with big N's and as in long N's. Right? Win, right? So cool. Win, win, win. Winning every morning is a great thing. So I would request everyone who have attended and also uh, going through the notes, like you should be practicing on a daily basis. I will post this recording on the channel. Go through the recording once again, right? If you feel like 1 hour का recording बहुत लंबा हो जाएगा, उसको 2x पे चला दो, ठीक है? Because we are already learning it very in a slow pace. So go on this YouTube or go to this channel and go through these recordings or daily life that we are putting, right? And I'm also posting the URL on the group, and here you can go, okay, and watch these things day by day, like day आज day 22 है, okay? So this is right now going day 21 20, and I will update these also. So this is how it is, ठीक है? So try to go it like complete lectures नहीं है, but you can practice it more. So because in the coming this 21st को हमारा एग्जाम है, राइट? 21st को या 20 को, संडे को. So there will be a short interview, guys. ठीक है? And the notes I have given on this GitHub. So every day I'm updating these notes also. So if you don't practice, you will easily forget this, right? You will easily forget this. So see, these loops are here. Everything is here, guys. Okay. So what you have to do is you have to practice more. Okay. If you won't practice, you won't learn. Okay. And इसको भी पढ़ा हो भाई, तुम भी practice कर लो कुछ, ठीक है? So all right, guys. This is all for today, and let's close this uh, live as of now. Okay. Bye bye. Take care, and see you tomorrow on the same time, 8 a.m.